You're watching the second News Hour debate on Times Now Super Prime Time. Everyone is talking about that fight that broke out. If I were to not really call it a fight, a disagreement which broke out at Anna Hazare's rally with Gopal Rai of the Aadmi party being snubbed and then questioning in turn VK Singh. Gopal Rai joins us live. Arun Bhatia, who's a former IAS supporter, IAS officer, he supports the Aadmi party. And Medha Patkar, one of the well-known social activists of the country, and she has stood by Anna's side from day one. Even now she supports Anna Hazare in much of his efforts. Medha Patkar, thank you. Gopal Rai ji, thank you very much. Arun Bhatia, thank you. Now the first question to you, Gopal Rai, is why did you, आप चुप क्यों नहीं रहे? Why did you speak up? वहाँ पे झगड़ा क्यों हुआ? Why did you interrupt the speech of General VK Singh? Why did you not avoid that? देखिए कल से ही वहाँ पर ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से इस जन लोकपाल के आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए। रात में अन्ना ने तय किया था कि मंच से कोई भी आकर के बोलेगा, बात रखेगा, वो जन लोकपाल पे बात रखेगा। लेकिन आज जब वीके सिंह जी ने बोलना शुरू किया, जन लोकपाल पर तो कम बोला उन्होंने, लेकिन वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच बनाना शुरू कर दिया उस प्लेटफॉर्म को। इसलिए मुझे बुरा लगा और मैंने ऑब्जेक्ट किया कि जन लोकपाल की आप बात करें, उस पर चर्चा करें, जिसके लिए हम सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अभी ये वक्त इकट्ठा होने का है। दूसरी बात, कल से मैं 2 दिन से देख रहा हूं, यहां पर ये कोशिश हो रही है कुछ लोगों द्वारा कि वो सरकारी लोकपाल, जो कमजोर लोकपाल है, उस पर अन्ना से हां कराई जाए। अन्ना बार बार ये कह रहे हैं कि हम देखने के बाद करेंगे, लेकिन ये कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो रही है किसी तरह इसे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में छिपाया जाए और एक कमजोर लोकपाल बिल पास किया जाए। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट किया। मेधा पाटकर, do you think Anna Hazare is being used as a puppet by the government to pass a weak Lokpal? That's a fairly strong allegation that Gopal Rai has come up with. I don't think so. I mean, Anna is also not that non-strategic person. Like Gandhi sometimes was considered to be a naive politician, but politician he was. Anna Hazare has enough of experience to resort to various strategies at the right point of time. I think he has chosen the right point of time, not only for getting credit, but getting the cause achieved and attained. I also feel that simultaneously that the fears and the suspicion by the Aadmi party is understandable. They are continuously wanting to compete with and counter the Congress and BJP. So they have to be as watchdogs, watching and monitoring what the other two mainstream parties have been doing. Now, presuming that the other parties are trying to influence Anna Hazare, or not only Anna Hazare, everything against the Aadmi party's viewpoint or credit, I think one cannot stop all that, one cannot prevent all that, and as a truly politicians and true political party now, they have to also understand this and take it with the right kind of spirit and ease. Now, I think those 2 words you used are very significant. Arun Bhatia, those 2 words she uses. She says that the Aadmi party is afraid and is suspicious. She says the Aadmi party is operating out of fear and suspicion because it is having to compete with the Congress and the BJP. Arun Bhatia, has it come down to this in your view, since you've always supported the Aadmi party, that the Aadmi party today is afraid and suspicious of what Anna Hazare's next move will be? No, I'm not saying On that. the contrary, sir, I think it's Anna Hazare who is afraid and suspicious. Oh, I thought I was being please asked. continue. Yeah, 1 second. Please continue. On the contrary, I feel that it's Anna Hazare who is afraid and suspicious because he backed out of the movement and Kejriwal has taken it forward. There was a risk in politicizing the movement. If his candidates had lost, no one would be asking about Anna. He didn't want to take the risk. Kejriwal took the risk and he's done a great thing. That's the best and the obvious and the strongest, most powerful way to take the movement forward. Anna is feeling left out. And I'm quite sure that a very diluted bill will be passed.
I also don't know what are the clauses. I haven't been following it. But the way it's been hashed around and made a khichdi out of, at the end of it all, you'll just have a Lokpal bill which does not fulfill its objectives. What has Anna said about that? And the general was totally out of line. He had no business to say that लोगों को अन्य से बड़ा नहीं होना चाहिए. I can turn around and say अन्ना को नहीं समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा है. I mean, why should he say this at an open speech? And why should he say that the movement is weakened because people, लोगों को अपना दल नहीं बनाना चाहिए? Well, if the guy is not ready, if Anna is not ready to join politics, Kejriwal formed a party, everybody is welcome to join it or not join it. Are you criticizing him for that? Are you criticizing something in India which has happened for the first time? Non-political people, non-political families, newcomers. No, Arun Bhatia, tell me one thing, can I be completely direct? Is there an ego battle on in your view? Why don't, you're a straight talking man. There are a lot of people who believe Anna Hazare has got into an ego battle with Arvind Kejriwal now, especially after his results in the Delhi election. Absolutely, sir. That's what. Yes, sir. Absolutely. That's what I was trying to say. Because Kejriwal has forged ahead. He's really opened a new dimension in Indian politics. Anna still sits on fast and stops his fast, and he still sits on fast. He doesn't take the movement forward because he doesn't want to risk losing face. If he joins a political party and those candidates are not elected, there's no Anna on TV. There's no Anna comparison with Gandhi. Anna is zero. So understand that, Medha Patkar. He sat at home, and Kejriwal took. See, that's the voice that's coming out. That more and more people are now beginning to say, Medha Patkar, that Anna Hazare is insecure and perhaps even jealous of the success of Arvind Kejriwal, which is why after the Delhi results, when Arvind Kejriwal's party did so well, he said if I had campaigned for Arvind Kejriwal, he would have become chief minister with a majority. So that, you know, and maybe it is true, Medha Patkar, that certain political parties or interests, and after all, VK Singh has shared the stage with Narendra Modi. He seemed to be close to the BJP. Certain political parties and interests are using that sense of insecurity and competition in Anna towards Arvind Kejriwal to create trouble. But Arnab, what I'm saying is misinterpreted partly, but Arun Bhatia is saying too much. Too much? Today, I know him as a very mature, political but also conscientious bureaucrat, and I really salute him for that. At the same time, to say that Anna is in competition or not just suspicious, but what is the word he used is jealous is too much, you know. Why too much? Think, then why did he say if I had campaigned for AAP, Arvind would have become chief minister? See, those kinds of statements behove on the Annaji because he is a septuagenarian, and I think he looks at Arvind Kejriwal and all, as Arvind himself says, as his disciples or the young kind of followers. No, but he's repeatedly criticized Arvind Kejriwal. He's repeatedly criticized the Aam Aadmi Party. I'm saying he could and he should have avoided that statement. But that happens with Annaji, with Bahugunaji and all these people. At the same time, I think when the Aam Aadmi Party youths are staying continuously, that they are with Annaji and they consider him as a guru, then Arun Bhatia also should not say that much. And I think I am not denying that the other parties are trying to kind of instigate. They'll instigate. They'll create the trouble. Influence Annaji. That may be happening. I am saying what is expected of Aam Aadmi Party and what is expected of people like us, whether it is Arun Bhatia in support or whether the people in the people's movement is not to juxtapose them against each other. No, Medha Patkar, you look at what happened today. Gopal Rai, आज क्या हुआ उसकी बात करते हैं. By the way, Arun Bhatia, if you want to respond, you want to respond to her, or should I move to the next question? Because Medha Patkar says you are speaking too much. You can move to the next. Move to the next question. Okay. Can I just say one thing? Go ahead. One small thing, sir. You know, we should get over this business of not criticizing netas. You know, it wasn't something very blasphemous that I said about Anna. And I'm sure that a lot of people think that way. So I think in these discussions especially, we shouldn't sort of put a halo around these guys and say, don't say anything strong against them. Good point.
Good point. No, I want to go into what happened today. गोपाल राय जी, आपको आप आवाज आ रही है आपको? तो आपसे कुछ पूछना चाहूंगा. I'd like to ask you whether, you know, I was surprised, frankly, Gopal Rai, today when VK Singh, you know, who I have had utmost respect for on other issues, but when VK Singh used the platform to fire darts at the Aam Aadmi Party, मतलब वो उनकी तीर आम आदमी पार्टी पर थी, मुझे लगा. और कई लोगों ने बोला कि जब इशू जन लोकपाल और लोकपाल का है तो क्या जरूरत है वीके सिंह को वहां पे ये सब कहना कि some people think they are bigger than Anna, and I think he made some comments like that. So Gopal Rai, what do you think? Why did you get provoked? देखिए यही बात थी, क्योंकि अन्ना ने कल ही ये तय किया था, सार्वजनिक तौर पर पत्रकारों ने पूछा था, अन्ना ने कहा था कि लोग आएंगे, लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ चर्चा जन लोकपाल की होगी जी. लेकिन आज जिस तरह से वीके सिंह जी आए, जन लोकपाल की जगह उन्होंने पर्सनल एजेंडे को शुरू किया वहां से, तो कुल मिलाकर के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो 2 दिन से मुझे महसूस हो रहा था कि वहां जिस तरह की कोशिश हो रही है कि इस बार के अनशन को डाइवर्ट कर दिया जाए और चुपके से सरकारी जो कमजोर लोकपाल है उस पर अन्ना से किसी तरह से हामी भरवा लिया जाए. नहीं, गोपाल राय जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप. आर यू सेइंग दैट ऑल दिस इज बीइंग स्टेज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लोग सारे जो रालेगांव सिद्धि में फास्ट हो रहा है वगैरह, उसको एक तरह से स्टेज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? जरूर ये कोशिश हो रही है वहां पर. और जब वीके सिंह जी ने फ्रैंकली एजेंडा जन लोकपाल की जगह जब पर्सनल एजेंडे को खोले, जिसकी वहां जरूरत नहीं थी, हम भी वहां बैठे थे, वीके सिंह भी थे, यहाँ पर मनसे के राज ठाकरे के विधायक वहां आकर के बैठे थे, और भी लोग सारे बैठे थे. जब सारे लोग एक मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए हैं, उस मुद्दे को रेज करने की जगह जब डाइवर्ट करने की कोशिश किया वीके सिंह जी ने, तब मैंने उस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि ये ठीक नहीं हो रहा है. तो ये फिर मेधा पटकर को पूछना चाहूंगा that Medha Patkar, at that point of time when VK Singh goes and personally attacks Arvind Kejriwal or the Aam Aadmi Party, you don't expect Gopal Rai, who's a senior leader of the Aam Aadmi Party, to sit down there and be quiet. In fact, my question to you is, don't you think that Anna Hazare should have stopped VK Singh and said, listen, General, please stop right there, General. Yes. Anna should have been fair and said, stop there, General, don't attack Arvind Kejriwal and his party directly or indirectly. This platform is not for that. Why didn't he stop it? Instead, he threw Gopal Rai out. अर्नब, मुझे एक्चुअली इट इज जस्ट एन इंसिडेंस, इट वाज, और मैंने पूरा वो वॉच नहीं किया एंड आई वाज नॉट अ विटनेस टू इट. तो मैं ज्यादा महत्व का मुद्दा मुझे ये लगता है कि अब जबकि गोपाल जी और सब लोग अरविंद जी के साथ पार्टी पॉलिटिक्स में उतरे हैं, तो ये जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, एक दूसरे से क्रेडिट लेने की बात है, वो तो इट्स बिकम अ नेचुरल प्रैक्टिस कहां पे है गोपाल राय जी? और जनरल वीके सिंह भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं, और वहां इनको सामने देखकर उनका वो मूड हुआ होगा. आई थिंक उन्होंने, मुझे जैसे जानकारी ली मैंने, तो उन्होंने कुछ 1-2 स्टेटमेंट किए. कुमार विश्वास ने भी कल कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स किए थे. पॉलिटिकल इज अ बिग वर्ड, but within that narrow electoral political context, I'm saying. No, but why are you blaming Medha Patkar? Why are you blaming Arvind Kejriwal? Why is it because he has joined politics? गोपाल राय जी कुछ कहना चाहेंगे आप? Not blaming at all. Huh? I'm not blaming at all. Arnab, don't put the words in my But you mouth. use the word competitive. You said नहीं, Gopal Rai is saying something to you. Gopal Rai. गोपाल राय जी कुछ कहना है आपसे, 1 मिनट. 5 अप्रैल को जब अन्ना ने अनशन शुरू किया, जन लोकपाल के लिए अन्ना ने अनशन शुरू किया, तब भी हम साथ थे. माइलेज लेने के लिए नहीं थे. 13 दिन तक रामलीला मैदान का आंदोलन चला, माइलेज लेने के लिए नहीं चला. 10 दिन तक फिर अनशन पे रहे, माइलेज लेने के लिए नहीं चले. हमने ये पहले दिन से वादा किया था कि हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जन लोकपाल नहीं पास करेगा, जैसा वो एक्सरसाइज किया पार्लियामेंट के अंदर, हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना पड़ेगा. लेकिन उसी दिन हमने फैसला किया था कि अन्ना जब भी आंदोलन करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे. इसीलिए हम वहां गए थे. वहां पर हम मंच पे नहीं गए अन्ना के, हम जमीन पर, जैसे पहले अनशन हमने किया था पहले बार अप्रैल में, हम जमीन पर लेटे हुए अनशन कर रहे थे. लेकिन अगर कोई इस अन्ना के कल ये बात कहने के बाद भी जब वो उस मंच का दुरुपयोग शुरू हुआ, तब मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया. और आप भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अन्ना को अभी चिट्ठी लिख करके मैं देकर आया हूं
हमें इस बात में अपील करके आया हूं कि अन्ना, आप जिस जन लोकपाल के लिए देश लड़ा है, आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, उस जन लोकपाल को आप पास जरूर कराएंगे। और हमें यह आशंका है कि जिस तरह से उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, कोशिश हो रही है किससे घेरा जा रहा है गोपाल राय जी? हु इज सराउंडिंग अन्ना? देखिए, एक मिनट, ओके, मेधा पटकर कुछ कह रही है आपसे। मेधा पटकर जी कहिए। नहीं, मैं इतना ही कहती हूँ कि क्योंकि मैं गोपाल भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जितने कमिटेड है उतने ही हेडस्ट्रॉन्ग है और वो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। उस समय भी जब अन्ना पास करते थे, गोपाल जी को मालूम है कि उन्होंने किस प्रकार की स्ट्रांग रिएक्शन दी थी और फॉर सम जेन्युइन रीजन, बट उनकी रिएक्शन कभी कभी ऐसी होती है, वैसी हुई होगी। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट वंस दे आर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इस प्रकार से दूसरों से भी कीचड़ उछालना, उनको इंस्टिगेट करना, उनको सवाल करने के लिए मजबूर करना, चैलेंज देना, ये होगा। वो कब कितना रिएक्शन देना चाहिए, ये अभी इन लोगों को बहुत ही केयरफुली प्लान करना चाहिए। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इसमें माहिर है, वो कब रिएक्शन देना वो समझते हैं। गोपाल जी को भी और सभी को, कुमार विश्वास जी को भी उस प्रकार से करना। मैं कोई ये बड़ापन का रोल नहीं ले रही हूं, पर जो मेरे मन में आ रहा है वो कह रही हूं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, डोंट पुट द वर्ड्स इन माय माउथ। आई एम सेइंग नो, बट यू सेड ही इज हेडस्ट्रॉन्ग, दैट दे आर टेकन। नो, अरुण भाटिया, नो, गोपाल राय जी को मैंने बोला। गोपाल राय, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेधा पटकर कह रहे हैं आप काफी हेडस्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग। नहीं, आपने स्ट्रॉन्ग नहीं कहा, आपने बोला हेडस्ट्रॉन्ग। इन अदर वर्ड्स ही इज टू रिजिड। हेडस्ट्रॉन्ग मतलब एक बार दिमाग में आया कि उसको न छोड़ने वाले और उसको प्रकाश क्या बोलते हैं कि उसको दर्शित करने वाले या उसको मुखरित करने वाले, ऐसे वो व्यक्ति है, उनका व्यक्तिमत्व है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इंसिडेंस होता है। अरुण भाटिया इज कमिंग टू गोपाल राय's डिफेंस। अरुण भाटिया, इसके करना, अरुण भाटिया, अन्ना जी के मूवमेंट और पार्टी में क्या संबंध? नहीं, 1 मिनट। अरुण भाटिया प्लीज टू मेधा पटकर। Yes, sir. You know, Medha ji, I have a lot of respect for you, a lot. But today what you're doing is you're personalizing it all the time. First you personalize it regarding me, now you're personalizing it regarding Mr. Our Gopal friend here. We should try and avoid that. It's not... No, please continue. I was just saying. Yeah, 1 minute. Why do you think she's personalizing it? Yeah, she says, I think that, yeah, and I think that actually the point you raised was very good. It was Anna's duty to monitor the situation. He was the main center over there. He should have said that, General, don't start criticizing Kejriwal. वो मेरा आदमी है, उसने अच्छा काम किया है. Don't criticize him. There's nothing wrong if he formed a party, because the general clearly said that you should be part of a movement, not start अपना ही दल बनाना शुरू मत करो. So if I would have got a low impression if a AAP supporter had kept quiet over there and not done anything. If I were over there, I would have intervened in the same way. Gopal Rai, you've been described. I'll give you the last word on this. Gopal Rai, you heard Medha Patkar's description of you as headstrong. उनका कहना ये है कि आप इतने headstrong हैं, आपको No, but that was your word, Medha Patkar. Please, I'm not putting any words in your mouth. You said yes, word. Gopal Rai is responding to you. Yes, Gopal Rai. मेधा ताई हमारे बारे में अच्छी तरह जानती हैं, आंदोलनों में 1-2 बार नहीं, बहुत बार साथ रहे हैं हम लोग। देखिए, हम बहुत स्तर तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन गलत काम जो राष्ट्र देश के हित में हो, समाज के हित में, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसीलिए हमने गोली भी खाई। पहले अनशन की जिसकी बात कर रही है मेधा जी, उस अनशन के दौरान भी यही हुआ था। राजपत्र जारी करने के बाद सरकार अनशन तोड़वा रही थी। हमने कहा था कि टाइम बाउंड हमें अल्टीमेटम दे करके अनशन तोड़ना चाहिए, और वही हुआ। 3 महीने बाद सरकार ने धोखा दे दिया। फिर दोबारा हम लोगों को 16 अगस्त से आंदोलन में जाना पड़ा। यही तो मैं मांग कर रहा था। तो अपने अनुभव के आधार पर हमें ये बात आज फिर लग रही थी वहां पर कि दोबारा देश के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह की शक्तियां वहां मोबिलाइज हो रही हैं, आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, और एक कमजोर लोकपाल लाने के लिए गोपाल जी अन्ना के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। गोपाल जी, आपसे अगर मैं सीधी तरह से ये पूछूं कि मुझे तो आज नहीं कई महीनों से लग रहा है कि
अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे बहुत समय हो गया, वो टूट चुके हैं, वो अलग अलग रास्ते पे जा चुके हैं और ये सिर्फ ड्रामा और दिखावा है। ये ड्रामा और दिखावा है कि मैं बहुत मानता हूं अन्ना को और अन्ना कहते हैं कि अच्छा वो मेरे बेटे के तरह वगैरह। ये सब ड्रामा है, ये दिखावा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या डर है कि अन्ना हजारे अगर अलग हो जाए तो अरविंद केजरीवाल विल लूज अ लॉट ऑफ हिज सपोर्ट? क्या आपको डर है कि अगले जो चुनाव में आप या दिल्ली में हो कहां पे आपको अन्ना की जरूरत होगी? इस डर के कारण आप इस झूठ को चलाए जा रहे हैं that it is a lie today that Arvind Kejriwal and Anna Hazare are working together. If anything, what this has proven, Gopal Rai, is that they are apart. So I think you should stop this pretense. Are you scared of totally breaking off with Anna for political reasons? पहली बात मैं आपको बता दूं, ना किसी तरह का किसी को डर नहीं है। जन लोकपाल का आंदोलन वो मुद्दा था, वो लक्ष्य है जिसके लिए हम सब साथ आए जी। और जन लोकपाल की वो लड़ाई है कि जो बार बार हमें एक दूसरे के पास लाती है जी। आज अन्ना ने कहा आप गांव छोड़ दो, मैंने गांव छोड़ दिया, लेकिन अन्ना को मैं लिख करके दे करके आया हूं कि अनशन नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप जन लोकपाल के लिए अनशन पे आप बैठे रहोगे रालेगढ़ में, तब तक मैं भी अपने घर पर अनशन पे रहूंगा, क्योंकि हम सारे इकट्ठा हुए थे किस लिए? एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल। और उस मकसद के लिए कमिटेड हैं और लड़ेंगे और जन लोकपाल के लिए अन्ना की बहुत जरूरत है। डू यू हैव टू हैव अन्ना विथ यू? जन लोकपाल के लिए अन्ना की जरूरत है। अन्ना ने वायस उठाया, अन्ना आज अनशन पे बैठे हैं, बात फिर हो रही है। सबकी अपनी अपनी महत्ता है और अपनी अपनी जरूरत है, सबका सम्मान है, लेकिन जब कोई गलत डायरेक्शन में आंदोलन जाएगा वहां पर सवाल उठेगा। अगर कमजोर लोकपाल बिल पास होगा तो सवाल उठेगा। इसलिए अन्ना का अपनी जगह है। हम सारे लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अलावा भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी अपनी महत्ता है। तो ये एक आंदोलन है, एक लक्ष्य के लिए है, उसमें अन्ना का भी अपना रोल है, हम सबका भी अपना रोल है। Well, I only think that the only people who will be very, very happy, Medha, Patkar, at what has been going on. In fact, I think there will be celebrations in the Congress camp, and there will be a round of applause and celebrations in the BJP camp today at what has happened in Ralegaon City. And this ego battle between Arvind and Anna can continue, but the people who are celebrating are the two parties who they want to challenge. That is why the point is not about the relationship between Arvind Kejriwal and Anna Hazare. At least as former colleagues and those who have shared a common cause and a common movement, I think they should keep themselves related to each other the way it would be smooth enough. Now, when the Anna you can't pretend, Medha Patkar, with respect. The Aam Aadmi party with them, please, with respect to both of them, I'm saying, when he initiates a fast, I think if I were Aam Aadmi party, leading activist, yes, I would have thought many times before I would have gone there and joined the fast. Going there to support is okay, but if Gopal Rai has done that, it's fair enough. He has done it with commitment, let us say, but people would look at it also as they're trying to gain credit out of it, etc. So now, out of that, if General VK Singh, I would not make that kind of a comment, because I'm more concerned about the cause ultimately, as they all are saying, yes, and the relationship between the movement and the party emerging out of movement. I think that has to be the issue of public debate, and we must go into the depth, because after all, the lakhs and lakhs of people who participated in the movement, and even today they continue to be in their own movements, and those who are also supporting the party, yes, it is their lives which are at stake every time. So the small incidents, out of the emotional responses and also the politics involved in it from both sides to an extent, I agree. I think we should not, I agree, but you know, Medha Patkar, Gopal Rai and Arun Bhatia, as I wrap up, I'll only say one thing. Somewhere, you know, as Arun Bhatia says, nobody is a deity, nobody is above questioning, but egos have got enmeshed in this. And sometimes when there's an ego battle between someone who sees himself as a mentor and someone who sees himself as a protege, it can be a fairly bitter ego battle. So let's see where it goes. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining me on that chat.